Perfect. I think you all can hear me as well as see me. Good evening. How are you doing, everybody? This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu Biotonic, welcoming you all to today's very, very important session, Locomotion and Movement. आज मैं Sliding Filament Theory आपको करवाने वाली हूँ. Totally finish हो जाएगा. It's going to get over. It's a very important session, so pay a lot of attention. Yes, Shreya and everybody else, gangs, ready? Perfect. Important lecture, 100% one question will come in the NEET examination from this particular topic. It is a very, very important, very, very relevant topic. So please pay a lot of attention. Is that clear, everybody? Come on, let's get started. Make sure that you're liking, make sure that you're sharing, make sure that you're subscribing, and make sure that you're becoming a part of Vedantu Biotonic. So don't forget to press the like, the share, and the subscribe button. Here is the remote control. Let's get started. Chalo. So guys, अगर कभी कोई problem आ रही है, you want to get in touch with me, you want to ask me something, you know where to do that. Vani Susa Vedantu, that's my official Instagram account. Okay, and from tomorrow you will see. And did you hear the podcast today? So daily dose of positivity, उसका link भी मैंने वहाँ share कर दिया है. We will make sure कि यार आपकी life जो है वो एकदम crystal clear हो जाए, absolutely smooth हो जाए, and you guys do very well. My book is out there. Leave behind a beautiful review. I'm looking at you. All of you leaving behind some amazing reviews. Hundreds and thousands of copies have got sold. Grab yours. कल एक बहुत special day because most expected questions. Full syllabus, 90 questions we're going to be doing sharp at 5 o'clock. Human Health and Disease CBSE Term 2 sample paper pattern में करवाने वाली हूँ sharp at 9 o'clock today evening. Don't miss that. छोटा सा लेक्चर है आज का पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बहुत स्लो जाएंगे. We will go with a lot of depth. I will give you a lot of tricks and a lot of handmade notes to remember what I'm trying to tell you. So, hey Shreya, send me a picture. Tomorrow, 5 more t-shirts are going to get dispatched. Right? Hello. So there was a slide, we just got stuck for 10 seconds. Tomorrow, 5 more t-shirts are going to get dispatched. So tomorrow is going to be a big day. Exciting. It's coming, it's coming, it's coming. Tomorrow I'm going to dispatch some more t-shirts. NEET Pro subscription के बारे में बता देती हूँ because the day has got extended and this particular offer has got extended. Guys, don't miss this opportunity. 2 years के course details सुन लो. सिर्फ आज इसका last day है. Physics, chemistry, bio, English, Hindi, special classes separately with unlimited micro courses. ये जो है ना ये रामबान है. This is like a powerhouse. Right? It's like an absolute powerhouse. Do you know what is the powerhouse? कि यार मतलब आप देखो हजारों topics के micro courses आप देख सकते हो. आपके सामने होंगे. Right? आप pick करो और बोलो यार इस topic का micro course मुझे चाहिए. ये वाला topic मेरा weak है. So this is what you need. This is exactly what you need. This is like mitochondria of NEET. ये क्या होता है? ठीक है ना? चलो चलते हैं आगे. तो क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलेगा प्रो मेंबरशिप के साथ. बोर्ड एग्जाम्स आपको फ्री मिलेंगे. इसको तो मतलब मिस करना ही नहीं. एब्सोल्युटली मिस मत करना. 20 आवर्स के लेक्चर्स पर वीक, 14 बुक्स जिनमें कोड है, उस कोड को स्कैन किया सीधा वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाता है. करेक्ट. ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है. टेस्ट्स हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, क्लास में असाइनमेंट्स, क्लास के बाद असाइनमेंट्स, टेस्ट, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है. चलो आगे बढ़ते हैं. यस, और इसका प्राइस देख लो एक बार जाने से पहले बस. यस, इसका प्राइस देख लो एक बार फटाफट से. इसका जस्ट प्राइस देख लो और उसके बाद डिसाइड करो कि यार मैम इसमें को इसमें क्या करना है. टेकिंग सेशन while wearing your t-shirt is next level feeling good. ये तो सच में next level feeling है. गुड. फोटो शेयर कर दो. यस, चलो यहां से हमने पिछली क्लास की थी. फटाफट आगे बढ़ते हैं. स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखो. स्केलेटल मसल्स क्या होती है? वॉलंटरी होती है. दैट मींस कौन कंट्रोल करता है? स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करेंगी हम. टीएमबी, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन. यस, fascicle आपको याद है, bundles, right? The covering is called fascia, फिर होगा fiber. You remember this? Do you remember sarcoplasm? The cytoplasm is called sarcoplasm. The endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum, which holds calcium. याद है? Right? Fibers होते हैं, सारी चीजें याद है. पिछली बार बताई थी मैंने आपको.
यहां तक साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, टी ट्यूब्यूल कितने बच्चों को याद है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने बच्चों को याद है? सार्कोलेम्मा याद है? ये ग्राफ दिखाया था आपने, उषा मैम ओपी किया था क्लास में। So you have muscles, fascicles, muscle fibers और छोटे छोटे फाइबर्स कहलाते हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स। साइटोप्लाज्म कहलाएगा सार्कोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी सार्कोलेम्मा, टी ट्यूब्यूल, सब कुछ पता है। और मैंने आपको बोला था एक ये वाला टेबल कॉपी करके याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने लगभग पिछली क्लास को छोड़ा था, मैंने सार्कोलेम्मा बताया था, सार्कोप्लाज्म बताया था, ग्लाइकोजेन बताया था, मैंने बोला ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बनेगा, यस। मायोग्लोबिन पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आते हैं आज की क्लास पे, डन। अब आते हैं आज की सिंपल सुंदर सुशील क्लास पे, बहुत फील आने वाली है। बस अब तुम लोग बैठकर एकदम पे अटेंशन कर लो। तो न्यू स्लाइड कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, स्लाइड शो ऑन कर देते हैं, एंड अति सुंदर, अति सुशील, अति ऑसम क्लास होने वाली है। बस फुल से भी ज्यादा अटेंशन क्लास में दे दो, डन। फुल से भी ज्यादा क्लास में अटेंशन दे दो, मतलब एकदम 100% अटेंशन चाहिए मुझे क्लास में। यो ना पे अटेंशन। देखो बेटा, होता क्या है? होता ये कि ये है नर्व, सिग्नल लेकर आई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड प्लेट होगी अगर वो मसल है, एंड फिर वो सिग्नल जो नर्व लेकर आ रही है, उस सिग्नल की वजह से कैल्शियम रिलीज होता है। कैल्शियम रिलीज होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये जो सिग्नल आ रहा है, ये जो सिग्नल आ रहा है, can you all see the slides? Everybody, can you all see the slides? So the signal, the nerve is bringing the signal, it's bringing the signal to the neuromuscular junction. The neuromuscular junction is an end plate because of which calcium is getting released, and the calcium which is getting released is causing muscle contraction. Is that clear? Write are you on the chat section right now? This is nothing but the action potential which is causing the nerve signal. The action potential is causing calcium release. So first I have to tell you what is that action potential, how the muscle contracts, and calcium release के बाद what exactly is happening. So this is something I'm going to be teaching you in today's class, but before you move ahead and understand this, there are certain basics that you have to understand. Which topic is going on, Collective Kumar? I think you've come late or you're a new student. We're doing neuromuscular junction. We're basically doing sliding filament theory. In muscle and locomotion, we're trying to do contraction. Is that clear, everybody? Right, Princey? So what is going to happen exactly here? Let us see that. हो सकता है आज internet थोड़ा सा fluctuate करे, it might just go on off or something like that. Don't you worry about that. Even if it does, it's going to come back in a minute, so don't go anywhere. So most important thing for doing this is that nerve, the muscle has got contractile proteins. The muscle has got proteins which can contract. Because these are proteins which can contract, can I call them contractile proteins? Because these are proteins which can contract, can I call them contractile proteins? Is it, Aditi? That's so nice. Can I call them contractile proteins? Absolutely, we can call them Now, what are the contractile proteins? There are some contractile proteins which are very, very thin. Very thin. Like Amrit. Very thin. Thin is very important for acting. देखो लोग पतले होने चाहिए. Right? Body shame कर देते हैं otherwise. लोग पतले होने चाहिए. That is so bad. Otherwise body shame कर देते हैं. Yes. So thin fibers are called acting. Acting. Thin. याद रखना अमृत राज thin है और acting बहुत करता है. Yes, याद रखना अमृत राज is very thin और बहुत क्लास में acting करता है. Acting. Right? फिर होते हैं थिक फाइबर्स. थिक है अभिषेक के यार. कौन है थिक? कौन है? हर्षप्रियम या अभिषेक के यार? आई थिंक अभिषेक के यार. थिक हर्षप्रियम, सॉरी हर्षप्रियम. थिक मायोसिन. M for mota in Hindi, which is again very bad because people body shame, but M, thick, thin, thick, thin, thick, thin. Now there is another way of looking at the same fibers. The
same contractile proteins, the same fibers. There is another way of looking at it. Isotropic. Isotropic. Right? Isotropic. I think Harsh is definitely thicker than Priyam. Harsh Priyam. I think is definitely thicker than Amrit. हर्ष तो पीट देगा अमृत को 2 मिनट में, मुझे ऐसा लगता है. क्या कहते हो? यस, थिन इज एक्टिंग. एक्टिंग कौन करता है? अमृत. ए. यस, डन. आ जाओ. आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक वो होगा जो लाइट को पास होने देगा. अब क्योंकि लाइट पास हो रही है, इट विल अपियर लाइट कलर बैंड्स. लाइट बैंड, लाइट बैंड. लाइट पास होगी ना, लाइट कलर होंगे. सेकेंड है आई. दिस इज कॉल्ड द आई बैंड. इट्स कॉल्ड द आई बैंड. बाहर ही रहने देना, अंदर नहीं. आई बैंड. और ए won't allow light to pass. It won't allow light to pass. That is why it is called the dark band. Dark का word आवा A. Any doubts? Any doubts? I will talk about that later, beta. Palm पे hurt and all little later. पहले इस पे ध्यान दे दो. Any doubts? 4 चीजें मैंने अभी तक आपको याद करवाई हैं. एक्टिंग करता है अमृत, A band. Yes. अमृत से ज्यादा थिक है हर्ष, M. Myosin. Actually, we are not talking about body shape. We are just talking about thick, thin. Yes, like if I talk about, who's it? Maths teacher. She's very slim. 9th, 10th maths teacher. Junior section maths teacher. She's very thin. What's her name? I forgot. Neha ma'am. Oh, no, I don't think so. Yeah. I don't know. Deepandu, I don't remember him. Anyways, come back. You're my big fan, Gauri. Thank you so much. Let's focus on the class. Thanks. छोड़िए यार, मेरे को कंफ्यूज कर दोगे तो आ जाओ वापस क्लास में. ठीक है, चलो. ओके, तो यू हैव neuromuscular junction, end plate, right? Calcium will have to release from there. For calcium to release, there has to be contractions. How will it contract? You require contractile proteins. You have thick and thin proteins. The thick proteins are called as myosin. The thin is called as actin. Then you have light and dark bands. Light, because it is an isotropic, it will allow the light to pass. It is the I band. And the one which won't allow light to pass is an isotropic. They are the dark or the A bands. If you have doubts, ask me now. Can we move ahead to the next slide, please? Is this clear, everybody? What causes thickness? Double. This is thin. This is thick. Yes or no? This is thin band. Thickness. I'll show you. This is a thick band. Thin and thick. Yes or no? Thickness. Yes, thick band. Thin band. Right, everybody? Now, there is a coat which I am wearing. I wore this coat at 5 p.m. I wore. Can you see it is thin? It's very thin. Whatever. What am I showing? But this is very thick because it's got cold now. So do you understand thick, thin, everybody? That one was very thin. That's why I was feeling cold. You can look at this one is like it's a proper coat, so it's thick. Right, everybody? Did you get it? So you have thick and thin. Maybe light can pass if you look carefully. If you hang it in the sun, light will pass. But if you hang this in the sun, light will not pass.
Are you getting my point, everybody? So that is what is the meaning of anisotropic, isotropic, thick and thin. Write you on the chat section. I think we are sorted. Righto! Let's move on. Now, just look at this diagram. Where is my pen? Okay, my pen is in my pocket. Just like my key is in my pocket, and then I forget where is my key. Now just look at that. Just look at this. I don't want you to look at anything else. I just want you to look here. Is this appearing thick to you? Comparison to this. Yellow or red? Yellow आपको thick लगना चाहिए. Red आपको फोटो में थिन लगना चाहिए. बता दो. Just look at it. Yes, absolutely मैम. तो बेटा अगर ये थिक है तो लाइट पास नहीं होगी, तो ये अपेयर होगा डार्क. डार्क का उठाओ ए बैंड यहां से येलो वाला. यस और नो? ए बैंड. खुद ही बता दो, मैंने तो आपको कुछ पढ़ाया नहीं, अपने आप आपको समझ में आ रहा है. ए बैंड प्लीज अपने आप बताओ मुझे. इज इट क्लियर? ये थिक है ना, थिक, तो लाइट नहीं पास होगी. क्रॉस बनाया मैंने, दैट्स व्हाई इट्स अ डार्क बैंड. यस और नो ऑन माय स्क्रीन प्लीज. क्विक 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 क्विक. थिक. नाउ टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एरिया, ब्लैक कलर. व्हाट इज हैपनिंग इन बोथ ब्लैक एरियाज? टेल मी. In both black, what is happening? On my screen, quick, write it on the chat section. What is happening in both black areas? Is there an overlap? Red, yellow, red, yellow, red, yellow. Is there an overlap? Because of the overlap, what is happening? Will it appear more dark? And center will appear light because there is no overlap. Yes or no? Overlap की वजह से श्रेया जी, will it be more dark? This is my duster. I dust my screen with it. If I do double, see this is, if I do double, will it become more dark types like that? Because double, I do it like this, no light will be able to pass. I do it like this, nothing, no light, it's become so thick. So now, my chunno munnu gangsters, the center of the dark, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, खांसी जुकाम जा ही नहीं रहा है. The center of the dark, it is appearing light. That is why it's called the Heller zone. H. ये क्या है? Look at the green one. Is this light? ये क्या है? ये पूरा. ये क्या है? Is this light? Green one. Is this light? This is definitely light. इसके बीच में एक लाइन दिख रही है आपको ब्लैक कलर की. लाइट के बीच में. लाइट के बीच में आपको लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की. That is called the Z line. लाइट के बीच में आपको जो लाइन नजर आ रही है, that is called the Z line. That's called the Z line. And Z to Z is called the sarcomere. Z to Z is called the sarcomere. Is that clear? Right here on my chat section right now. So let us revise it. Thin line, this one, thin here, I band, light I band, बीच में A band, A band के बीच की जगह H, light to light, Z to Z, sarcomere. Is that clear, everybody? Is that clear, everybody? So myofibrils are cylindrical. They run the length of the muscle fibers. The light, dark, light, dark, light, dark. Now just look here. Light, dark, light, dark, light, dark. They are the striations. Light, light के बीच की Z, Z. Light Z, LZ. Light Z, Z to Z, sarcomere. Unit of contraction. Z line to Z line. Where is the Z line? It is in between the light ones. Done? Is that clear? This is normally going to be there. This entire thing is normally there. Now listen what happens. It's very interesting. Aya action potential. Action potential. Action potential लेकर आया depolarization. Depolarization की वजह से हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज.
कैल्शियम अब जाकर क्या करेगा एक्टिन मायोसिन में? ये डार्क बैंड्स मायोसिन के हैं, ये थिन लाइन एक्टिन की है। अब ये जो कैल्शियम है ये एक्टिन और मायोसिन पे व्हाट इज इट गोइंग टू डू? इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कैन आई डू दिस? It's a beautiful thing. Action potential came, muscle is sitting like this. Suddenly action potential came, calcium is released. Now what will the actin myosin do? Is the sliding filament theory which we have to do right now. Can I teach you? Cross bridge banega. Can you see yahan par, if you look closely, can you see there is something like this? Can you see myosin head is there, some head like things are there in myosin? Just tell me, can you see? It will go and pull. It will form a bridge. ये जाकर इस पे अटैच होगा और ब्रिज बनाएगा। Let us look at that in detail. Understood? Write it on the chat section. Come on guys, थोड़ा दिल बड़ा करो. 1 like, 1 share, 1 subscribe. So till now it is clear. Acting myosin, thick thin. Isotropic and isotropic. Done. Acting thin, myosin thick, I band, isotropic, light is going to pass, A band, anisotropic, Heller zone, H zone. H के बीच में एक लाइन होती है जिसको M लाइन कहते हैं, and Z to Z is sarcomere. Is that clear? This is the myosin. Can you see the small myosin? I've just zoomed it for you. Small myosin दिख रहा है आपको? Can you see small myosin? Everybody. Can you see small myosin? हाँ जी मैम, बिल्कुल दिख गया। I've just zoomed it. Can you see it now? Can you see it now? Do you see there are head and tail? Is the slide, the way the stories are being told in the slide, are you loving it? The way the slides are moving like a storyboard, are you loving it? Say yes ma'am. एनसीईआरटी मार्किंग करवा दूंगी चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर। अगले हफ्ते से आपकी एनसीईआरटी मार्किंग ही करवा रही हूं, टेंशन ना लो। एक सेकेंड, थोड़ा कैमरा सेट कर रही हूं। चुन्नू है हम, मुन्नू है हम, ठीक है? दिख गया? तो टेढ़ा हो गया, कर दूंगी अगली क्लास में सेट। यस, मायोसिन टेल एंड हेड, इनको कहते हैं मीरोमायोसिन्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? मीरो। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल एक गोल्फ क्लब की तरह है या हॉकी क्लब के, ठीक है? डबल ग्लोबुलर हेड, कितने हेड्स हैं? दिस कम्स G2, कितने हेड्स हैं बता दो? 1 2 3 4। हाउ मेनी डबल? चेन एंड डबल ग्लोबुलर हेड। कैन यू सी दैट? सॉरी, मैंने कहा ना थोड़ा सा इंटरनेट हल्का सा 19-20 ऊपर नीचे होगा शायद। चेन थोड़ा सा होगा, टेंशन ना लो। चेन एंड डबल ग्लोबुलर हेड। इज दैट क्लियर? क्रॉस ब्रिज अकर ऑन ईच साइड ऑफ अ सार्कोमेयर बट नन इन द मिडल। अब देखते हैं क्या होता है। ये दिख रहा है आपको? मीरोमायोसिन टेल दिख गई, हेड दिख गई। मीरोमायोसिन के दो टाइप होते हैं, एक होता है हेवी मीरोमायोसिन और एक होता है लाइट मीरोमायोसिन। हेवी मीरोमायोसिन में हेड और छोटी सी आर्म होती है, हेवी मीरोमायोसिन में हेड और छोटी सी आर्म होती है। लाइट मीरोमायोसिन में टेल होती है, HMM LMM। हेवी मीरोमायोसिन में हेड होता है, लाइट मीरोमायोसिन, डोंट मेक काला गोलास, लाइट मीरोमायोसिन में टेल होती है। हेड के पास एटीपी एंजाइम, यस एटीपेज एंजाइम होती है। क्यों? बिकॉज द हेड हैज टू गो एंड अटैच टू द टेल। The head has to go and attach, tail का मतलब है मेरा head has to go and attach to actin। आया समझ में? हेड को जाकर एक्टिन से चिपकना है, हेड को जाकर, इसीलिए हेड को एनर्जी चाहिए, उसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। पावर स्ट्रोक। व्हाट इज मीरोमायोसिन? प्रोटीन, जस्ट लाइक केराटिन, कोलाजन, प्रोटीन। हेवी एंड लाइट, heavy is going to make the head and the arm, yes, light is going to make the tail, and the head will have ATPase because the head has to go and attach to the actin. To go and attach to the actin, does it require energy? Yes, so the head will have binding sites for ATP so that it can go and attach to the actin. अब actin पे आ जाओ, actin पे आ जाओ।
अब इधर देखो, इट्स वेरी सिंपल। ये एक्टिन है और ये आर दे गोइंग टू अटैच? वीव जस्ट कम टू द एंड ऑफ इट, इट्स वेरी सिंपल। आर दे गोइंग टू अटैच? हु इज द कवर? ये कवर कौन है? लेट मी शो यू हियर, दिस इज इट। ये क्लोज्ड है मान लो। कैन यू एड समथिंग? सो कैल्शियम विल कम, calcium will come and open this active site. Can you see? This is the site. Site पे लगा है troponin C and tropomyosin. This is the active site. यहां पर जाकर head को लगना है, यहां पर. Who is covering it? This is the active site. Active site. इसको किसने कवर किया है? ट्रोपोनिन ने कवर किया है और ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया है। सिग्नल आएगा एक्शन पोटेंशियल, कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी विल पुल the tropomyosin and head will come and attach because of ATP. So calcium आएगा, open कर देगा, calcium आएगा, this is, it's closed, calcium, it's buffering, I know, don't worry, open, open, understood. Calcium will come and remove. See, ये टेप लगी है. Who will come and remove that? कौन करेगा आके remove? Did you understand this, everybody? Did you understand this, everybody? Perfect. So, दो फिलामेंट रन करते हैं. देख लो. Two filaments of tropomyosin. देखो दो दिख रहे हैं, धागा बना हुआ है, दो है, दो और ट्रोपोनिन की कितनी सब यूनिट्स है? नीट का एग्जाम है, ट्रोपोमायोसिन में दो है धागे। कैन यू सी दो धागे लाइक दैट? और ट्रोपोनिन में कितने हैं? ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट, ट्रोपोनिन की 3 यूनिट कवर करके बैठे। एक्टिव साइट को ये मास्क कर देते हैं, एक्टिव साइट्स को एक्टिन पे। ये एक्टिन के गोले हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट और ट्रोपोनिन्स 3 globules are binding to the active site. Calcium will be released, right? See, this I have taught you. Myosin, cross bridge बनाएंगे, heads are right, myromyosin, calcium will be released. 2 actin है, troponin, tropomyosin है, 2 actins are there. Yes, calcium will be released. Now let us see that, and it will go and attach. मैं दिखाती हूँ. अभी देखो, ये देखो, calcium release पे see, myosin, see, actin, power stroke. And see, Z chain is coming inside. See, contraction, Z chain is coming inside. See, from both sides, actin will do like this. Actin will be pulled inside. Active site, ये रही एक्टिव साइट येलो। कौन चिपका हुआ था इसमें? ट्रोपोनिन के 3 मॉलिक्यूल, ट्रोपोमायोसिन के 2 मॉलिक्यूल। हाउ डिड मायोसिन हेड गेट एनर्जी? How did the myosin head get energy? Tell me. Because it has ATPs. Myosin head. And who was preventing attachment? 3 molecules of troponin C and 2 fibers of tropomyosin. Calcium will come. It will attach to troponin. Troponin is attached to tropomyosin. देखो troponin is attached to tropomyosin. Calcium इसको out करेगा. Active site expose होगी. Myosin will pull, Z chain will come inside. Is that clear? That is sliding filament theory. Resting state pe the sites are masked. When calcium will be released, when action potential will come. Is that clear, everybody? Is that clear?
See. Is that clear? Can I take a test on this chapter? It's got over today. See, action potential आया, action potential, neuromuscular junction, NMJ end plate, T tubules में action potential अंदर गया, T tubules is saying T tubule, T tubule, T tubule is taking signal to sarcoplasmic reticulum, T tubules, calcium is getting released. Calcium ions are getting released from sarcoplasmic reticulum when signal is coming from neuromuscular junction. Synaptic vesicles ने acetylcholine रिलीज किया, acetylcholine ने कैल्शियम को रिलीज करवा दिया फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कैल्शियम जाकर अटैच हो गया ट्रोपोनिन पे. कैल्शियम देखो, कैल्शियम देख लो, येलो साइट्स एक्सपोज हो गई. कैल्शियम इज बाउंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन इज बाउंड टू ट्रोपोमायोसिन. Right? Calcium is bound to tropo and active sites are exposed. Understood everybody? This is very important. Calcium. So होता क्या है? Signal comes in the form of acetylcholine. This is neuromuscular junction. याद करो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में. ये बताया था this signal, right? I told you see acetylcholine will attach here, but calcium will enter. This calcium, this signal will release calcium from endoplasmic reticulum. Calcium binds with troponin. Troponin is bind to tropomyosin. Unmask the active site. When you unmask the active site, ये देखो pull हो रहा है. Z line is getting reduced. This is very important. See how Z line is getting reduced. See. Z line because अंदर को दोनों तरफ से ऐसे पुल करेगा. Did you see that? Is anything happening to dark band or is it remaining same? A band. A band is remaining same. Yes or no? MCQ question. Z line reduces. A band remains same. Sai Lakshmi. A band remains same. थोड़ी देर के लिए. Can you see H zone? See H zone is there. Can you see H zone here? Tell me, question mark. H zone disappears for some time. H zone disappears. A band remains same. Z line pulled inside. These are 3 points. A band remains same. Z line pulled inside. H zone disappears. समझ आ गया? Z line is pulled inwards, shortening of sarcomere, I bands get shortened, A bands retain the length, myosin से ADP निकल जाएगा. जब myosin से ADP निकल गया, ATP खत्म हो गया, myosin वापस चला गया, troponin tropomyosin वापस आ गया, मसल रिलैक्स हो गई, दोबारा सिग्नल आया, you will require new ATP, new calcium release. Simple. Any doubts? Yes? ATP दोबारा आएगा, दोबारा कैल्शियम आयंस पंप होंगी, Z लाइन पहले रिटर्न करेंगी, फिर वापस आएंगे. राइट? जब ATP वापस जाएगा तो कैल्शियम भी वापस जाएगा. कैल्शियम आयंस मसल को रिलैक्स करने के लिए जब ATP जाएगा उसको वापस खींच लेंगे, हेड को वापस खींच लेंगे. देखो वापस आ गया, हेड अटैच हुआ था, वापस आ गया, देखो वापस आ गया. तो कैल्शियम भी वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा. Z लाइन दोबारा ओपन हो जाएगी, फिर सिग्नल आएगा, फिर दोबारा कैल्शियम रिलीज होगा, फिर ATP यूज होगा, फिर पावर स्ट्रोक रिकवरी, पावर स्ट्रोक रिकवरी. गॉट इट एवरीबडी? डिड यू गेट इट? मायोसिन हेड अटैच हो गया, दोबारा ATP जब अटैच होगा वापस आएगा, फिर जाता है, फिर आता है. पावर रिकवरी, पावर रिकवरी. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एंड दिस फाइनली फिनिशेस द चैप्टर. आज आपकी सेल भी खत्म हो रही है. CBSE Term 2 क्रैश कोर्स गेटिंग ओवर टुडे. प्लीज जाइएगा, ले लीजिएगा. कल आपके 90 मार्क्स का टेस्ट है, परसों में एक स्पेसिफिक टेस्ट इस वाले टॉपिक पे रख लूंगी. यस, नीट टेस्ट परसों. बेटा टेस्ट तो कल ही होगा,
क्योंकि प्लान बन गया है अभी, बट आपके लिए मैं दोबारा ले लूंगी। आर यू एक्साइटेड फॉर द कंप्लीट 90 क्वेश्चंस टेस्ट? यू वांट टू गिव दिस? एंड गाइस, ये प्रो मेंबरशिप स्पेशली टर्म 2 की क्रैश कोर्स की सिर्फ 499 के 11th का सारा फिजिक्स केमिस्ट्री का बचा हुआ सिलेबस खत्म कर लो। बिल्कुल भी वेट मत करो, प्लीज फटाफट से अपना सिलेबस खत्म करो। यस, टेक केयर, वीडी प्रो कोड यूज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आ जाओ। कल 90 क्वेश्चंस का टेस्ट है, देना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय गाइस।